अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूएफ रिएक्शंस। तो दिस इज उसामा। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक दफा फिर से एक मजे की वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो उमर भाई, आज हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका टाइटल जो है जी, वाई बांग्लादेश इकोनॉमी इज बूमिंग। ओह वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखेंगे आज बांग्लादेश की इकोनॉमी सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बिल्कुल ऐसी वो है। उन्होंने ना सिर्फ थोड़े से वक्त में अपने आप को मनवाया है, बल्कि आगे आने और दुनिया को बताया है, दुनिया को बताया। और आने वाले सालों में ये बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल, बेशक, क्योंकि बेशक। इसकी इकोनॉमी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, और इंडिया से भी आज तो ये ज़्यादा ऊपर जा रही है। पर कैपिटा इनका बहुत अच्छा है, बहुत तो पहले जबरदस्त हम वीडियो देखेंगे, बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले गाइस प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस, here we गो। go. Among South Asian economies, Bangladesh is touted as a rising star. In 2019, its per capita income was $1,856, substantially higher than Pakistan's $1,285 and only $250 less than of India. In 2020, Bangladesh might have edged ahead of India because it registered a growth rate of 2.4%, whereas India's GDP shrank by 7.3%. The figures put it ahead of the other Asian countries, including India. It could shed its least developed country status in 5 years. When it first became a country in 1971, Bangladesh was incredibly poor. The GDP growth rate was minus 14%. Politically, instability was rife, and the nation was devastated by floods and famine. Things have moved. Bangladesh now has an average growth rate of 8%, well above the Asian average, and Asian Development Bank figures show. A decline in population growth is also helping an increase in per capita income. The number of unemployed workers living below the poverty line dropped from 73.5% in 2010 to 10.4% in 2018. The economy of Bangladesh is characterized as a developing market economy. It is the 37th largest in the world in nominal terms and 31st largest by purchasing power parity. It is classified among the next 11 emerging market, middle-income economies and a frontier market. In the first quarter of 2019, Bangladesh was the world's 7th fastest growing economy with a rate of 8.3 real GDP annual growth. Dhaka and Chittagong are the principal financial centers of the country, being home to the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange. The financial sector of Bangladesh is the third largest in the Indian subcontinent. Bangladesh is one of the world's fastest growing economies. And to calculate, Bangladesh rises to the South Asia standout star as India, Pakistan fall behind. India, eternally confident about being the only South Asian economy that matters, now must grapple with the fact that it too is poorer than Bangladesh in per capita terms. Between 2011 and 2019, Bangladesh's exports grew 8.6% every year, compared to the world average of 0.4%. The success is largely due to the country's relentless focus on products such as apparel, in which it possesses a comparative advantage. Meanwhile, the share of Bangladeshi women in the labor force has consistently grown, unlike in India and Pakistan, where it has decreased. And Bangladesh has maintained a public debt to GDP ratio between 30% and 40%. India and Pakistan will both emerge from the pandemic with public debt close to 90% of GDP. Fiscal refrains has allowed Bangladesh's private sector to borrow and invest. Bangladesh's success brings its own set of problems. For one, its exports benefit from the country's participation in various mechanisms that allow tariff-free access to developed economies. These groupings are only open to the world's least developed countries.
thanks to its growth, Bangladesh will likely have to give up these privileges by 2026 or so. As its economy matures, its comparative advantages will also change. Like Vietnam and others, it will then have to shift emphasis away from garments to higher value exports. The transition will test Bangladesh as it has those other nations. The government needs a strategy for the next decade that focuses on new forms of global integration and on a continued transformation of the economy. The smartest thing to do would be to retain access to the developed world's market by signing free trade agreements. Work has started on the FTA with the Association of Southeast Asian Nations, according to Bangladeshi officials, but there's a lot more to be done. Once again, Bangladesh should become benchmark itself against Vietnam, which is not only part of the China-centric Regional Comprehensive Economic Partnership and the successor to the Trans-Pacific Partnership, but also signed an FTA with the European Union in 2019. In 1971, success seemed well beyond a long shot. Today, the country's 160 million plus people, packed into a fertile delta that's more densely populated than the Vatican City, seem destined to be the South Asia's standout success. Bangladesh's growth story has been a much touted one. The GDP growth averaged around 6% from 2000 to 2019, the World Bank data shows. It was not long before the term GDP growth became a catchphrase in the country. This is primarily because policymakers have ardently portrayed this metric as a vital sign of development, as it is reflected both in economic progress and human well-being. The majority of Bangladeshis have little idea how and whether at all this growth impacts their happiness. The GDP growth is an outlandish concept for the poor and those making a living in the informal economy. Even in 2020, when the coronavirus pandemic rocked economies around the world, Bangladesh managed it to be an outlier. It posted a 2.3% growth. That year, the economy of its neighbor India shrank by 7.9%. In fact, all South Asian countries registered negative growth in 2020 except for Bangladesh and Pakistan. In June, Bangladesh Finance Minister Mustafa Kamal said that the country would be on top of the rest of the South Asia and Southeast Asia in terms of GDP growth, considering the recent pace of the economy. Certainly, it would be an enviable achievement, but would Bangladeshis be significantly happier then? In fact, Bangladesh's poor happiness ranking shows there is another side of GDP growth story that involves a not-so-happy reality. In 2021 World Happiness Report, Bangladesh ranked 68 among 95 nations. The report specially focused on how the pandemic had affected the happiness levels of nations. Why is that? If only high GDP growth could make a nation increasingly happier, Bangladesh's happiness ranking should have leapt to prominence over time. Yes, economic growth has improved living standards globally. Bangladesh has also made significant strides in poverty reduction as its economy has grown. Poverty declined from 44.2% in 1991 to 13.8% in 2016 and 17. Life expectancy and literacy rates have increased markedly as well. So the biggest challenge Bangladesh faces is related to how the country ensures that the fruit of growth and development reach people at the bottom of the economic pyramid. जी तो फ्रेंड्स हमने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और मतलब उसमें बताया यार बांग्लादेश ने किस तरीके से अपने जीडीपी को ऊपर किया, कम वक्तों में अपने ऊपर लेके आया सबसे। और बहुत मुझे तो बड़ी अच्छी लगी वीडियो, क्योंकि नो डाउट कि बांग्लादेश ने कम वक्त में जिस तरीके से अपने इकोनॉमी को, अपने जीडीपी का पर कैपिटा को जिस तरीके से ऊपर लेके गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो बहुत ज़बरदस्त बांग्लादेश के लिए है। और दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो बताया है कि यार जो लोग कहते थे कि बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकता इतने कम वक्त में, और उन्होंने करके दिखाया जी, नो डाउट। तो अभी जो 2020 के मुताबिक जो जीडीपी था उनका वो था 324.2 बिलियन US डॉलर। हाँ बिल्कुल,
जो कि पाकिस्तान से भी ऊपर है, और पाकिस्तान का थ्रू 263.7 पाकिस्तान के था। नीचे है, बांग्लादेश का बहुत ज़बरदस्त है। और पर कैपिटा की अगर बात की जाए तो पर कैपिटा जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान और इंडिया दोनों से ऊपर है। बिल्कुल तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि बांग्लादेश का जो है पर कैपिटा वो दोनों कंट्री से ऊपर है। तो आने वाले वक्त में इसी तरह बांग्लादेश तरक्की करता जाए। देखिए जो मुल्क तरक्की करेगा वही ऊपर जाएगा, बिल्कुल साफ सी बात है। जिसकी नीयत होगी वो ऊपर जाएगा, वो अपनी आवाम के लिए सोचेगा, वो करेगा। और बांग्लादेश वो कर रहा है अपनी पब्लिक के लिए। इससे ये है कि इनकी इकोनॉमी बेहतर होने के साथ साथ जो बेरोजगारी है उसमें भी जो है वो कमी आई है और लोगों को रोजगार मिला है और लोग काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यही चेंज आता है कंट्री में और जब इकोनॉमी ऊपर जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।